Good morning and welcome to my class. I'm Ms. Vandana Gupta, Assistant Professor of Mathematics. So today we are going to continue with mutual funds, which is a subunit of Unit 1, Shares and Mutual Fund. In this, only a small topic is remaining, which I'm going to take today. That is called as a SIP, that is Systematic Investment Plan. Now, what is this SIP? SIP, which is also with the full form is Systematic Investment Plan. See, all of you are aware of the recurring deposit in bank, which is called as RD. See, बैंक में कई तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, देन RD अकाउंट. सो इसमें से RD अकाउंट क्या होता है? इसमें देखो, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, यानी डाल सकते हैं और कभी भी उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज द सेविंग अकाउंट. फिक्स्ड डिपॉजिट में आप क्या करते हैं, एक बार पैसा डाल देते हैं, समझो 2 साल के लिए डाल दिया, फिर बीच में आप नहीं निकाल सकते, 2 साल के बाद मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही आप निकालेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट. What is RD? RD means recurring deposit. यानी उसमें क्या करते हैं, आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या हर 2 महीने या हर साल, जो भी आपने जो पीरियड डिसाइड किया है, उसमें आप सपोज हर महीने किया है तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट से 5,000 रुपए डालेंगे. ओके, सपोज आपने RD अकाउंट 1 साल के लिए किया तो हर महीने आप 5-5, 10-10 हजार या जो भी आपका अमाउंट है वो डालेंगे, और जब आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको वो अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट, RD अकाउंट. ओके, RD अकाउंट में आप कभी भी पैसा डालो और कभी भी निकालो ऐसा नहीं कर सकते. सेविंग अकाउंट में वैसा कर सकते. ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कुछ RD की तरह ही है, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही है. इसमें क्या होता है, सी अगर आपके पास कुछ पैसा है जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, से फॉर एग्जांपल 20,000, तो पूरा का पूरा 20,000 आप एक ही दिन में इन्वेस्ट ना करके उसको आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे, मतलब से 5-5 हजार रुपए 4 महीने करेंगे. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव 20,000. ओके, सो instead of investing this entire amount to purchase the units of mutual fund, you will invest only 5,000 rupees for 4 months. So first month में 5,000, second month में 5,000, third month में 5,000 and fourth month में 5. इसके क्या इसका फायदा है? एक फायदा तो इसका ये है कि आपको पूरा का पूरा पैसा 20,000 एक साथ नहीं डालना है ना. हर महीने आप 5-5 हजार रुपए डाल रहे हैं तो आपका पैसा एक साथ नहीं जा रहा है. ओके, दूसरा इसका क्या फायदा है, एज यू नो दैट NAV नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इट इज नॉट सेम एवरी डे, है ना. वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है. तो जब कभी वैल्यू मार्केट में कम होगा, यानी उसका प्राइस कम होगा, तो उस समय आप ज्यादा यूनिट खरीद सकेंगे. और अगर आपने पूरा का पूरा 20,000 एक ही दिन में डाल दिया, जिस दिन NAV बहुत ज्यादा था, तो आपके पास कम यूनिट्स आएंगे, है ना. तो इसमें क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और एंड ये तो मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है जहां पर 4 मंथ से लिया है, लेकिन जनरली पीपल इन्वेस्ट इन SIP फॉर लॉन्ग रन, यानी कि 1 साल, 2 साल, 30, 10 साल, 50, 5 साल, इस तरह से, यानी लंबे पीरियड. So in the long run, they earn a huge amount of money from systematic investment. So the whole idea of SIP is to invest the money not at one time, but in parts, in regular time interval. Okay, so in the long run, it is always beneficial. You get to earn more profit. Okay, so let us read what is systematic investment plan. Systematic investment plan, which is also called as SIP.
जब भी आपको ये आए मतलब क्वेश्चन, आप आरडी को याद ध्यान में रख लो. आरडी इज वेरी कॉमन एंड मोस्ट ऑफ यू नो दैट. So systematic investment plan is like recurring deposit in a bank. In SIP, a specific amount is invested at regular time intervals in a mutual fund. तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को रेगुलर टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करेंगे टू बाय द म्यूचुअल फंड यूनिट्स. The investor can decide the date and the type of scheme of the mutual fund. जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन से डेट पर अपना पैसा डालना है. फॉर एग्जाम्पल 1st of every month or 5th of every month or 10th of every month, whatever way he can decide. Now you have understood what is the meaning of SIP. Now we will see how the purchase price per unit you can calculate by using the rupee cost averaging method. So I will take it with the help of one example. So let us take an example. Straight away I am taking the problem. Mr. Bhatt invested rupees 5,000 on 1st of every month for 4 months in a SIP of a mutual fund with NAVs as rupees 109.48, 112.36, 108.14 and rupees 105.62 respectively. There was no entry load charge. Find the average price Mr. Bhatt paid using rupee cost averaging method and compare it with arithmetic mean of prices. Now we will see in the problem what is this rupee cost averaging. So let us first read the problem and try to understand. Look at here. Mr. Bhatt invested rupees 5,000 on 1st of every month for 4 months. What does this mean? This person, Mr. Bhatt, इसने 5,000 रुपए 1st of every month, मतलब 1 तारीख को, फर्स्ट डेट, हर महीने की फर्स्ट डेट को 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए. ओके, कितने महीने तक किए? 4 महीने तक, 4 months तक. ओके, अंडरस्टूड. तो ये 5,000 रुपए उसने हर महीने की 1 तारीख को 4 महीने तक की. मतलब वी विल प्रिपेयर ए टेबल लाइक दिस जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा मंथ. तो कितने महीने तक इसने इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट? 4 months तक. तो मंथ 1 2 3 4. ठीक है, इस तरह से आपको टेबल बनाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में. ठीक है, तो मंथ इज 1 2 3 4. कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने हर महीने? 5,000. सो सेकंड कॉलम विल बी अमाउंट इन्वेस्टेड इन रुपीस. सो फर्स्ट मंथ में भी 5,000, सेकंड मंथ में भी 5,000, थर्ड मंथ में भी 5,000 एंड फोर्थ मंथ में भी 5,000. सो टोटल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया? टोटल अमाउंट what he invested is 5,555 20,000. He has not invested entire 20,000 in one time. He has invested 20,000 parts में, 5,000. ठीक है, and total is 20,000. Okay, now read the question. So Mr. Bhatt invested 5,000 first of every month for 4 months in a SIP of a mutual fund with NAVs as rupees 109.40. मतलब पहले मंथ में जब उसने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया उस समय NAV कितना था? 109.40. तो विल मेक अनदर कॉलम ऑफ NAV, थर्ड कॉलम NAV 109.48. सेकेंड मंथ में 112.36, थर्ड मंथ में 108.14 and in the fourth month 105.62. So this is all given to you. Okay, so अभी तक जो मैंने टेबल में जो 3 कॉलम बनाए हैं इसमें जो भी मैंने इंफॉर्मेशन डाला है this is already given to me. Correct? 4 months है, amount is same 5,000 and the NAVs every month is different and I have written down the NAVs. Okay, now what is the other thing given to you? There was no entry load charge. यानी किसी भी मंथ में एंट्री लोड नहीं है.
तो एंट्री लोड इज इक्वल टू 0. ठीक है. फाइंड द एवरेज प्राइस. हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्राइस, एवरेज प्राइस पर यूनिट Mr. Bhatt has paid. Okay. And this method I will tell you. And then we have to find out arithmetic mean of prices and then compare. Okay. So let us solve the problem. So I hope you have understood that we are going to make a table like this. Okay. Now see here, यहाँ आपको दिया है कि entry load is 0. Okay. So what is the purchase price? You know what is the purchase price? Purchase price क्या होता है? Purchase price is equal to NAV plus entry load. Correct? Now entry load is 0. तो ये हो जाएगा आपका same as NAV. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम में purchase price is same as NAV because there is no entry. ठीक है. Now we will prepare the fourth column, number of units purchased, which you already know. We have solved so many problems on that. So how do you calculate number of units purchased? It is amount invested divided by purchase price, but purchase price is same as NAV. So divided by NAV. So for every month, we will find out how many units are purchased. So let us see for the first month. In the first month, amount invested is how much? 5,000. Correct? Divided by what is NAV on in the first month? 109.48. Find out this. 5,000 divided by 109.48. Use your calculator. Okay. So 5,000 divided by 109.48. It gives you 45.670. You take 3 decimal places. After decimal, take 3 digits in mutual funds. Okay. So number of units purchased in the first month when the NAV was 109.48 is 45.670. Let us see the next month. In the next month, what is the amount invested? It's same as 5,000 and divided by NAV. NAV is 112.36. 112.36. Find out. So 5,000 divided by 112.36. So that will give you 44.4998. So it will become 500. 44.500. Okay. Let us see the third month. In the third month, the amount invested is 5,000. NAV is 108.14. Find out. 5,000 divided by 108.14. So that is 46.236. 236. Okay. 46.236. Last month, the amount invested is 5,000. And look at the NAV in the fourth month, 105.62. Calculate. So 5,000 divided by 105.62 gives you 47.3395. So 340. 47.340. Okay. Actually, here you are getting 47.3395. But as I told you, we are going to take only up to 3 digits. So because the fourth digit is 5, we will increase this third digit by 1. So when you increase this by 1, 339 will become 40. So it is 340. Always in mutual funds, take up to 3 decimal places. मतलब decimal के बाद 3 digit तक लेना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? चौथा digit देखना पड़ेगा, fourth digit. And if it is 5 or more than 5, then increase the third digit by
1. So you can see here, look at this. Now observe this table. In the first month, NAV was 109.48 and how many units were purchased? 45.670. In the second month 112, मतलब NAV देखो increase हो गया, बढ़ गया, 109 से 112.36 हो गया. NAV बढ़ गया तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो गए, देखो 44.5. तो अगर रेट बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी लेस, है ना. थर्ड में कम हो गया, 108 हो गया. तो एज आई टोल्ड यू, NAV इज नॉट सेम ऑन एवरी डे. थर्ड मंथ में देखो 108 हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 44 से 46 हो गया, बढ़ गया. फिर और कम हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर और बढ़ गया. तो यू सी दैट इफ द NAV or the increases, the number of units will decrease, and if NAV decreases, कम होता है NAV, तो number of units are more. तो आपको अगर आपका पूरा 20,000 आप एक ही दिन में लगा दोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट, अगर उस दिन NAV ज्यादा हुआ तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम खरीद पाएंगे. समझ में आ रहा है. और अगर वही पैसे को आप पार्ट्स में लगाएंगे 5-5, तो आप देखोगे जिस दिन NAV सबसे कम था, देखो यहाँ पर 105 पॉइंट, उस दिन सबसे ज्यादा यूनिट्स खरीद सके, 47.34. Understood? So this is what is the the benefits of SIP. Now what we have to do, find out पूरे 4 महीने में उसने टोटल कितने यूनिट्स परचेस कर लिए. तो ऐड दिस कॉलम, फोर्थ कॉलम को ऐड करो, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. So 45.670 plus 44.50 plus 46.236 plus 47.340. So 45.670 plus 44.500 plus 46.236 plus 47.340, that gives you total units equal to 183.746. So these are total number of units. तो उसने 4 महीने में कितने यूनिट्स इकट्ठे कर लिए? Look at this, 183. इन सबको मैंने ऐड किया, ठीक है. तो we got this many units. Now we have to find out, see हर एक महीने में NAV was different, correct? Now we have to find out what is the average price per unit. Okay, so let us see how we calculate the average price. So average price per unit is total amount invested, कितना amount invest किया, divided by how many units were purchased. So this method of calculating the average price is called as rupee cost averaging method. So total amount invested कितना था? total amount कितना invest किया उसने? 5555 20,000, correct? 20,000, ना? So total amount invested is 20,000. 20,000. And how many units were purchased? 183 point total units, 183.746. 183.746. Okay, find out how much you will get. So 20,000 divided by 183.746. So that gives you 108.845 is 85. 108.85. Okay, so this is the average price per unit. Okay, how to calculate average price? Total amount invested, जितना total amount किया और total number divide by total number of units purchased. So this is the average price by rupee cost average. Now we will also find out the arithmetic mean of prices. Now what is the arithmetic? How do you calculate the arithmetic mean? देखो फर्स्ट मंथ में ये था परचेस प्राइस, सेकंड मंथ में ये, थर्ड मंथ में ये, फोर्थ मंथ में ये. अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइजेस, तो अरिथमेटिक मीन कैसा निकालते हैं? इन सबको ऐड करेंगे
और ये कितने हैं, 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। तो ऐड दीज परचेज प्राइस एनएवी, सो 109.48 plus 112.36 plus 108.14 plus 105.62। So अगर आप इन सब का सम करेंगे तो यू विल गेट हियर 435.6। फर्स्ट मंथ में ये परचेज प्राइस था, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस, मतलब व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? सो द सम टोटल ऑफ दिस divided by how many are there? 4. So 435.6 divided by 4. Sum of the prices is 435.6 and divide by 4. So how much you will get? This is how we calculate the arithmetic mean or the average. So 108.9. Okay. So look at here. The arithmetic mean of prices is coming as 108.9. Whereas by rupee cost averaging method, average price per unit comes out to be this. Okay. Now what you have to do? Compare it with arithmetic. You have to compare these two. ये दोनों को compare करना है. तो कौन सा वाला कम है? Look at here. This is 108.8. This is 108.9. So this is less. So this is what I've written here. Therefore, average price using rupee cost averaging method is less than the arithmetic mean of prices. ये comparison, ठीक है? तो always the average cost per unit will always be less than the arithmetic mean of prices. Okay. So I hope you have understood this question. Now in this question, there was no entry load. We'll take one more problem in which there is an entry load. Okay. So I hope you have understood this. हमको क्या करना है, टेबल बनाना है. पहले में फर्स्ट कॉलम विल बी मंथ, सेकंड कॉलम विल बी अमाउंट इन्वेस्टेड, third column will be NAV, and the most important column is number of units purchased. Let us see the, and then you have to find out the total amount, total purchase price, total unit, and then find out the average price per unit. Let us see the next problem. An investor invested rupees 4,000 on 2nd of every month for 5 months in a SIP of a mutual fund. The NAVs on these dates was rupees 33.26, 28.25, 35.57, 38.45 and 44.32. There was same entry load of 2.22%. इस प्रॉब्लम में एंट्री लोड है 2.22% for all these months. Same है सभी months. Find the average acquisition cost per unit by rupee cost averaging method, same way as we did in the previous problem, and compare it with arithmetic mean of prices. Okay. So what we have to do, first of all, we'll have to prepare the table. Okay. As usual, our first column will be month. Now in this problem, this person has invested 4,000 रुपए invest किया है on second date of every month for 5 months. यानी कितने month है यहाँ पर? 5 month है. 1, 2, 3, 4, 5. हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 and so on. So total amount is 20,000, but it is not invested in one time. It is invested in every month for 5 months. Every month 4,000 rupees. What are the NAVs on these dates? Write down the third column of NAV. So in the first month it is 33.26. That is what is written here. 28.25 in the second month, 35.57 in the third month, 38.45 in the fourth month, and in the fifth month 44.32. 44.32. Look at it, 44.32. There is same entry load of 2. इस problem में entry load भी है, so we will have to calculate entry load. So I have to prepare one more column. Entry load is 2.22%. You know that entry load is always calculated as a percentage of NAV. So entry load is equal to 2.22%. You also know that what is the purchase price of a unit? It is NAV plus entry load. See, previous problem में entry load was 0. So purchase price was same as NAV. लेकिन इस problem में NAV entry load है, तो आपको purchase price का column भी बनाना पड़ेगा. Purchase price is NAV plus entry load.
And then the last column, number of units purchased, that is amount invested divided by purchase price of a unit. तो ये प्रॉब्लम में I'm sorry, दो कॉलम आपके एक्स्ट्रा हो गए, एक तो एंट्री लोड का कॉलम और दूसरा परचेज प्राइस का कॉलम. तो दो कॉलम आपके इसमें एक्स्ट्रा है. Okay. Now I have already written here all these after calculation. I will show you how I got the first row, the figures in the first row. In a similar way, you can calculate the remaining figures. Okay, if you can do it, fine. Otherwise, we will do it in the next class. So let me tell you how we did for the first one. So in the first month, amount invested is 4,000. NAV is 33.26. Entry load is how much? 2.22%. Look at here in the same table is here. Entry load is how much? 2.22% of NAV. How do you calculate that? (2.22% of NAV, that's 33.26. It is 2.22 upon 100 into 33.26. Calculate. कितना आएगा? 2.22 into 33.26 divided by 100. So you will get 0.738. So you can take 0.74. Look at here, 0.7. Okay. Now purchase price is NAV plus N. NAV is 33.26 and this is 0.7. So add these two columns. So 33.26 plus 0.74. That gives you 34. So purchase price is 34. Look at here, 34. Right? Now number of units. It is amount invested divided by purchase price. What is the amount invested? It is 4,000. What is the purchase price? See here, it is 34. 4,000 divided by 34, which is equal to 117.647. So in the first month, these many units are purchased. Look at this, 117.647. Okay, so I have shown you how I got these figures. Okay, in a similar way, you can complete the table, and then you have to take the total. Total of purchase price, total of number of units, and then you can find out the average acquisition cost per unit as we did in the previous problem. Like this. Average acquisition cost is total amount, that is 20,000 divided by total number of units. And similarly, arithmetic mean of prices. So try to do this. If you complete, it is okay. If you cannot complete, then we will do it in the next class. Okay. The problem was too lengthy, so we could not complete both the problems. Okay. Thank you so much.